Myself, Ritesh Sunilaire, welcomes you to the lecture of Automobile Engineering Drawing of Automobile Department, Shivaji Rao S. Dondre, Polytechnic, Asanga. Our very first unit is Development of Surface, and we will going to study about the same. Consider any kind of solid. If we cover it with a paper, okay, if we cover that solid with a paper, and so formed covering is unfolded and is laid on a flat surface, the image we obtain is known as डेवलपमेंट ऑफ सरफेस. मतलब जब हम कोई भी सॉलिड के ऊपर एक पेपर रैप करते हैं, ओके, पेपर या फिर कोई भी शीट, फिर बाद में उसे जब आप अनकवर करके एक प्लेन सरफेस पर लेआउट करोगे, तब आपको जो 2D डायग्राम मिलता है उस सरफेस पे, उसे कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ दैट गिवन सॉलिड. Or simply you can say the development of surface or the developed surface when rolled or folded from its edges we get the original shape of the solid. मतलब जब आप जो डेवलपमेंट जो हमें डायग्राम मिली है 2D सरफेस पे, उसे जब आप फोल्ड करते हो या फिर रोल करते हो उनके एजेस से, तो हमें जो फाइनल ऑब्जेक्ट जो मिलता है सॉलिड, वो उस डेवलप्ड सॉलिड का ट्रू शेप होता है. Now an important point to note here that is that in development of surface, मतलब जो डेवलप्ड सरफेस किया होता है आपने, जो ड्राइंग बनाई रहती है, उनमें जो एजेस होते हैं ड्राइंग की, जितने भी आप एजेस या फिर लाइंस ड्रॉ करते हो, दोज ऑल आर द ट्रू शेप्स ऑफ द गिवन सॉलिड. वो जो सारी होती है वो ट्रू शेप्स, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट पर एक साइड, अगर कोई भी साइड 3 सेंटीमीटर का है, तो आपके ड्राइंग पर भी वो 3 सेंटीमीटर का ही होता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस टू बी कंसिडर. ओके, देन ओनली द डेवलपमेंट इज़ योर करेक्ट. और अगर आप डेवलप सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो आपको डिज़ायर्ड शेप में मिलेगा, अदरवाइज वो आपका मिसअप हो जाएगा और आपको उसकी द डेवलपमेंट विल बी इन द ऑफ नो यूज़. नाउ कमिंग टू द नीड्स एंड यूजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इन engineering. It is very essential in sheet metal work. In engineering, most of the vessels or the surfaces, curved surface or any kind of surface, they are made from a 2D plain metal sheet. In order to get that desired shape, we must know what kind of drawing should be done on that sheet and how it must be folded to get the desired shape. So it can be achieved if we know development of surface. It has not only uses in automobile industries but other industries also, such as aeronautics, shipbuilding and packaging, where aeronautics, as planes are made mostly in cylindrical shapes and other shapes, so there it is used. In shipbuilding, obviously, the whole ships are made from the metal sheets in different shapes, so again development of surface is necessary. And packaging industry, you must have seen the cartoons, or the deliveries we get are in the boxes, in the cardboards, we also call it as cartoons. Now that cartoons, if you unfold them, you will see that the whole box was made from a single sheet of paper, okay, the cardboard paper. So when you open that box and make it flat, you will get that development of a particular box. And also it is used for constructing many other objects, such as boilers, vessels. The importance is that if we know the proper knowledge of development of surface, uh, it will be the less wastage of शीट मेटल. अगर हमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की जानकारी हो, तो होता क्या है, आपका जो शीट मेटल होता है उसका जो है प्रॉपर यूज़ होता है, वेस्टेज जो होता है आफ्टर कटिंग लेफ्ट आउट जो मटेरियल जो होता है वो कम से कम होता है. डेवलपमेंट ऑफ सरफेस आपका बेस्ट एग्जांपल है, आप जब टेलरिंग को भी जाते हो आप कपड़े सिलने के लिए, वहाँ पे आपका कपड़ा एक 2D शीट में होता है. सो उधर भी आपका, अगर टेलर, आपने देखा होगा टेलर कुछ ड्राइंग्स बनाता है चौक से, वो काट के फिर स्टिच करके आपका कपड़ा तैयार करता है. इट इज़ नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ योर गारमेंट्स. आपकी जो कि गारमेंट्स है उनका वो डेवलपमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में. दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ surface. As we have now understood the importance and uses of development of surface, we will go to the methods of डेवलपमेंट सरफेस, कि मतलब आपकी जो डेवलपमेंट होता है वो कौन सी तरीके से की जाती है.
So basically there are four types of development of surface, that is namely parallel line method, radial line method, then is your triangulation method, and the fourth one is approximate method, जिसमें से आपकी जो दो है पहले की पैरेलल और रेडियल लाइन मेथड वही आपकी इस सिलेबस में कवर होने वाला है। बाकी की जो दो कॉम्प्लेक्स वाले वो नहीं होंगे, उनका खाली हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाकी पूरा फोकस और आपकी जो एग्जांपल्स होंगे वो सब रिलेटेड टू हो गया आपका पैरेलल लाइन मेथड और रेडियल लाइन मेथड। ओके, नाउ द type of methods are totally depend upon the angles between base and the sides. Consider any kind of solid and consider one side as one surface as a base, and related to it the sides for so formed are if at the right angles, then you have to use parallel line method, otherwise you have to use radial line method। मतलब अगर आप कोई भी सॉलिड लेते हो उसका एक फेस आप बेस कंसीडर करते हो, तो दूसरा जो फेस है अब वो अगर उसको परपेंडिकुलर होगा, उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, तो वो आपको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन मेथड, अदरवाइज आपको ड्रॉ करना है रेडियल लाइन मेथड के थ्रू। ओके, तो आपका पैरेलल लाइन मेथड में कौन से सॉलिड्स आते हैं, जैसे कि आपका प्रिज्म और सिलेंडर, दोनों का अगर आप देखोगे तो आपका बेस और टॉप का आपका जो टॉप होता है वो दोनों क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं। ओके, और एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, मतलब बोथ द बेस एंड इट्स ऑपोजिट फेस इज आइडेंटिकल एज वेल एज पैरेलल टू each other. So if this condition is satisfied, we have to use parallel line method, otherwise we have to go for the radial line method. Now coming to the radial line method, in radial line method when both the base or its opposite faces are not identical, or say one is bigger and one is smaller, then you have to use the radial line method। मतलब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका बेस और जो टॉप फेस है दोनों सेम है या नहीं। अगर नहीं है और दोनों में शेप्स में चेंजेस है, या फिर एक छोटा या फिर एक बड़ा है आइडेंटिकल होने के बावजूद, तब आपको रेडियल लाइन मेथड यूज़ करना है। उसमें आपको होता क्या है, अगर आप कई प्रॉब्लम्स में आपको एक सिंपल डायग्राम दी जाती है जिसमें आपका एक बेस होता है, ऊपर की तरफ एक टिप होता है, मीन्स आपकी जो साइड्स है बेस से शुरू होने वाले ऊपर एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो जाते हैं, तब आपको रेडियल लाइन मेथड यूज़ करनी है। एग्जांपल कोन या फिर पिरामिड, जहाँ पे एक बेस और ऊपर की तरफ एक टिप होता है। इन केस इन सम प्रॉब्लम्स आपको ऐसे भी डायग्राम दिए जाते हैं जहाँ पे एक बेस होता है और ऊपर एक फेस भी होता है, एक टॉप फेस भी होता है, दोनों का शेप आइडेंटिकल होता है, लेकिन एक छोटा या फिर एक बड़ा होता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपकी जो भी साइड्स है बेस टू टॉप को कनेक्ट करने वाले आपको एक्सटेंड करना है टूवर्ड्स द स्मॉलर साइड। अगर आपका बेस छोटा है तो आपको नीचे की तरफ उन साइड्स को एक्सटेंड करना, अगर आपका टॉप छोटा है तो आपको ऊपर की तरफ उसे extend करना। After extending, you will see that all the sides are connecting to one single point, and after doing that you will observe that the given object is nothing but a part of your prism or a cone। मतलब कोन या फिर प्रिज्म का एक वो पार्ट आपको नजर आएगा। एंड ऑब्वियसली एज आई सेड प्रिज्म और कोन के लिए आपको क्या यूज़ करना है, रेडियल लाइन मेथड। सो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का, हम ये आगे ग्राफिक्स के मदद से भी आप समझ पाओगे। नाउ वी विल लुक टू द एनिमेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेथड। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मतलब आपका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है, ऑब्जेक्ट कैसे होगा तो आपको कैसे उसे कट करके एक फ्लैट सरफेस पे डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन मेथड भी बताया जाएगा, फिर बाद में आपका रेडियल लाइन मेथड भी आपको बताया जाएगा। तो आपको ये वीडियो केयरफुल देखना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको फिर से उसको आप उसे ड्रैग बैक करके आप फिर से उसे देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑडियो भी दिया गया होगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आपको देखना है तो आप वो लिंक यूज़ करके यूट्यूब पर भी इसे देख सकते हो। Hi friends, today let's talk about development of surfaces. When the surfaces of a solid are laid out on a single plane, the figure obtained is known as its
development. This development represents the actual shape of all participating surfaces in that object. The surfaces, when bent or folded at the edges, form the solid. The knowledge of development of surfaces is essential in many industries. Let's understand this surface development concept with a simple illustration. Observe the pictorial view of a rectangular carton closed at both ends. Now imagine this box is cut along the edge AE and the sides are opened out. Observe the orthogonal front and top views of the carton. Then its developed surface view will appear as four equal sized rectangles. Each rectangle being the size of the longitudinal side of the box. The flaps of the boxes stand out as separate squares. Here, the surface development of the carton was done with the help of orthogonal views of the object. In general, the final fabricated product is made up of various geometrical shapes. There are different methods of surface development. The parallel line development method is used in surface development of cubes, prisms, cylinders, and objects having regular lateral surfaces. The radial line development method is used in surface development of pyramids, cones, and objects having slant edges
surfaces. Normally, in case of prisms, pyramids, and similar objects, the development of surfaces involves opening out the sides on a planar surface, while in the case of cylinders, cones, and similar objects, it involves rolling out the surfaces. So let's describe the development of a prism. The hexagonal prism is resting with its base on HP. One of its sides is parallel to VP. It is cut by a plane inclined at 45 degrees to HP and perpendicular to VP. The plane bisects the vertical axis of the prism. Observe its orthogonal views. Here, trace MN of the cutting plane makes an angle of 45 degrees with HP and passes through the midpoint of the vertical axis. To develop the surface, the prism is rolled out, making its lateral surfaces lying on a plane. The line which marks the boundaries of the rolling is known as stretch out line. It is A dash A dash here. A dash A dash has a length equal to the total side length 360 mm of the prism. Next, draw line A dash A double dash of length equal to prism's height, that is 150 mm, and complete the rectangle. After that, vertical points are marked at 60 mm apart and vertical lines
are drawn to cut A double dash A double dash. These projected rectangular planes are the vertical sides of the given prism. The horizontal projectors drawn from points on the line MN meet the vertical projector lines at 1 double dash through 1 double dash. Joining these intersecting points in a sequence gives the required developed surface of the prism. So friends, the development method was interesting, wasn't it? Let's develop some more surfaces in the next module. So this was your development of surfaces. The remaining two methods, which are not so important for your subject view, we will cover it in the next lecture. If anyone have doubts in given in following lecture, the lecture we have taken, please लेट मी नो इन द गूगल फॉर्म बिलो. आपको अटेंडेंस के लिए भी सेम गूगल फॉर्म होगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए गूगल फॉर्म पर आपका डिटेल्स फिल करके अटेंडेंस आपको तय करना है. थैंक यू.